everyone, I am Aflin and this time I am going to speak all the languages that I can speak and tell you guys how I learned them. The languages I can speak are English, Hindi, Urdu, Gujarati, Arabic, Spanish, Turkish, Italian, Indonesian and Portuguese. So first of all, I will start with my native language and then after I will switch to another languages. હવે હું ગુજરાતી ભાષા વિશે વાત કરું તો ગુજરાતી એ ભારતના ગુજરાત રાજ્યની સ્થાનિક ભાષા છે અને મારો જન્મ પણ ભારતના આ ગુજરાત રાજ્યમાં જ થયેલો છે. મારા માતા-પિતા પણ ગુજરાતી છે, તેથી ગુજરાતી એ મારી માતૃભાષા છે. તદુપરાંત મેં મારું ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળા સુધીનું ભણતર પણ ગુજરાતી માધ્યમમાં જ મેળવેલું છે અને ગુજરાતમાં ગુજરાતી સિવાય હિન્દી અને કચ્છી ભાષા પણ બોલાય છે. હવે આપણે ગુજરાતી ભાષાની થોડીક લોકપ્રિયતા વિશે વાત કરીએ તો ગુજરાતી ભાષા એ ભારત સિવાય પાકિસ્તાન, અમેરિકા અને યુકેમાં બહોળા પ્રમાણમાં બોલાય છે. એમાં પણ યુકેની રાજધાની લંડનમાં તો સૌથી સામાન્ય રીતે બોલાતી ભાષા એ ગુજરાતી છે. Ahora voy a hablar en español. En el 2017 viajé a Madrid para postular a la Universidad de Nebrija. Era mi primera vez en España y en ese momento no sabía saludar en español. En ese momento no sabía si el saludo era hola u hola, porque la H en alfabeto en español silenciosa, solo debía ignorarlo. Parecía difícil comunicarse con los locales. Por eso decidí aprender español. Para ello debía asistir a algunas clases. También comencé a practicar español con mis amigos. Una de mis amigas era Alicia. Ella también sabía hablar inglés y eso me ayudaba a aprender español con ella. Aprendí español en 3 meses. Durante le vacanze sono andato a Roma. A Roma uno spagnolo vive in Italia da 5 anni. Abbiamo interagito e mi ha chiesto quante lingue parlo. Così ho detto 6. Dopo averlo saputo, mi ha ispirato a impararne un'altra, che è italiano. Tornando da Roma, mi sono iscritto ai corsi per imparare italiano a Madrid. Ho anche iniziato a fare pratica con i miei amici italiani in Spagna. Ecco perché diventa facile da imparare. Ora posso parlare italiano. और अब हम हिंदी भाषा के बारे में बात करते हैं. तो हिंदी भाषा भारत में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है और हमारे यहाँ गुजरात में सभी बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में भी हिंदी सिखाई जाती है और विद्यालयों के अलावा हमारे भारत की बॉलीवुड की फिल्में और टेलीविजन धारावाहिक भी अक्सर हिंदी भाषा में ही होते हैं. तो उसी वजह से मेरे लिए भी ये हिंदी सीखना एकदम आसान हो गया. और जब हम गुजरात के बाहर के राज्यों में जाते हैं तो वहाँ के लोगों के साथ बातचीत करना हमारे लिए हिंदी की वजह से एकदम आसान है क्योंकि भारत की ज्यादातर आबादी हिंदी भाषा जानती है. अल-अन्ना सअब्दउ बिल-अरबी अना आफरीदीन अना मिनल हिंद अतअल्लमु अल-लुगत अल-अरबी मुंदु 15 आमन. اللغة العربية لغة صعبة لأنها من أصعب جدا نطقها. Şimdi Türkçe konuşuyorum. Yunus Emre Enstitüsü'nden Türkçe öğrendim. Haftada 2 kez çevrimiçi derslerim vardı. Türk dilini seviyorum çünkü Türkiye'yi seviyorum. Ben de Türkiye'ye gitmek istiyorum. Hiç Türk arkadaşım yok. Evet, bu doğru. Sen Türkçe konuşmayı biliyor musun? Evet. Tanıştığımıza memnun oldum. Sonra görüşürüz. अब हम उर्दू जबान के बारे में बताएं तो उर्दू जबान अरबी, हिंदी और फारसी इन 3 जबानों का मजमुआ है. उर्दू जबान सीखने के लिए बहुत आसान है. हमारे यहाँ मदारिस में दीनी तालीम उर्दू में दी जाती है और अलग से उर्दू जबान भी सिखाई जाती है. मैंने भी उर्दू जबान मदारिस से और ज्यादातर बयानात सुनकर हासिल की है. उर्दू जबान और अरबी जबान में कुछ हुरूफ के सिवा सभी हुरूफ लिखने में बराबर है. हाँ, मुझे लिखने में बहुत दुश्वारी पेश आती है. मेरे कई सारे दोस्त और रिश्तेदार हैं जिनके साथ मैं कई दफा उर्दू में बात करता हूँ और हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की तो ये मादरी जबान है और हिंदुस्तान में भी ज्यादातर उर्दू बोली जाती है. Sekarang saya berbicara bahasa Indonesia. Salah satu teman sekelas saya berasal dari Indonesia. Namanya Nurul. Bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Dia tahu bahasa Inggris, Turki, Indonesia dan juga baru-baru ini dia mulai belajar bahasa Jerman. Nurul bilang bahasa Indonesia akan mudah untuk saya pelajari. Dia menawarkan bantuan untuk membantu saya
belajar bahasa Indonesia. Dia mengajari saya bahasa Indonesia selama 6 bulan. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Nurul. Depois de aprender 9 idiomas, decidi aprender mês 1. Então eu escolhi o português como a minha 10ª língua. Estou aprendendo o português há um mês. Em um mês, aprendi como cumprimentar as pessoas e algumas frases básicas. Posso dizer bom dia e boa noite em português. Eu também quero melhorar o meu português. Hopefully you guys enjoyed this video. Make sure to comment how I fluent in your native language.